Welcome, JJ, to our podcast. We are doing this after a long time. And to all the viewers who do not know, JJ is my clanmate and a close friend as well. He has been playing Division from a very long time. इनके जो भी hot topics है, we'll discuss about it and we'll share our views. So coming to the Division 2, JJ अभी recently क्या हुआ है कि there was a exploit in Division 2 using which players were gaining a lot of XP. So Ubisoft वालों ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो रोल बैक कर दिया. एक्सप्लॉइट जितने भी प्लेयर्स ने किया था उन सबको बेसिकली उन्होंने पनिश किया है इन अ वे कि उनको जितने भी इन्होंने टाइम लगा के अपना ग्लिच किया था वो सब वेस्ट हो गया एंड रोल बैक कर दिया. जो इनिशियल उन्होंने स्टार्ट जहाँ पे भी वो बिगनिंग ऑफ द ग्लिच थे वहाँ पे कर दिया. एंड दे हैव फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो थे उनको 2 वीक का सस्पेंशन दिया है और रिपीट ऑफेंडर्स को उन्होंने बैन कर दिया है परमानेंटली. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन कंसिडरिंग डिवीजन 2 5 साल पुराना गेम है. डिवीजन 2 का अभी जो प्लेयर बेस चल रहा है इट इज नॉट ह्यूज इन नंबर्स बट इट्स देयर, इट्स बीन कंसिस्टेंट एंड जो डेव्स हैं वो कंसिस्टेंटली गेम को अपडेट भी कर रहे हैं. And I know personally a lot of players जो कि Division 2 खेलते हैं. But at the same time, when we talk about XP glitches, do you think doing some sort of a glitch is a good thing or is it a bad thing in your opinion? Well, in my opinion, I would say it is a very bad thing. क्योंकि मैं खुद एक लंबे टाइम से डिवीजन 2 खेल रहा हूँ, राइट. मेरा खुद का वॉच लेवल अभी शायद कुछ 2000 के ऊपर है, ठीक है. एंड इट टुक मी इयर्स टू रीच देयर. एंड इमेजिन कोई नया बंदा आता है और वो अचानक से ले लेता है ना 2000-3000 पहुंच जाता है एक रात में, विच इज नॉट फेयर फॉर मी, राइट. मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतना अपना कैरेक्टर बनाने के लिए एंड दीज गाइज आर जस्ट लाइक कमिंग इन and they have everything that they need, which is a very wrong thing for the wet players, right. So wo nahi hona chahiye, right. Even in my point of view personally, I think devs are right here because Division has always been like I mean it's been a really good game. We have compared it to Destiny 2 as well in terms of like competition के हिसाब से अगर देखा जाए. और जहाँ तक रही बात मतलब जितना मैं पर्सनली मुझे लगता है कि आई थिंक सही किया है यार. एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर एक्सप्लॉइटिंग समथिंग इन अ गेम डेवलपर्स के पास पूरा राइट होता है टू बैन यू. हाँ, टू बैन यू एज वेल इफ नीडेड. अगर चीटिंग कर रहे हो तो भाई तो बैन पड़ेगा ना सॉर्ट ऑफ. हालांकि ये और दूसरा ये भी तो है ना भाई कि चीटिंग कैसे कर रहे हो आप मतलब ये अनफेयर एडवांटेज भी तो देता है ना. आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा बढ़ा देता है पीवीपी के अंदर है. अभी कोई नया बंदा आएगा जैसे यू सेड कि अगर कोई नया बंदा आएगा डिवीजन 2 खेलने के लिए तो भाई वो तो ऑटोमेटिकली उसमें चला गया ना, मैक्स लेवल पे चला गया. हाँ, इट बी लाइक फक इट, आई एम किलिंग एवरीवन. एग्जैक्टली. तो फिर मेरे हिसाब से तो जो भी किया है आई टोटली एग्री विथ यू. व्हाट द डेव्स हैज डन इज कंप्लीटली फाइन और सही किया है. रोल बैक कर दिया उन्होंने. उनकी भी गलती लगती है. You mean developers की? Developers की, because they have all these beta servers and everything. So what are you doing? I mean, you're not a newbie developer, right? You have a hold on market since a long time, and if you are just releasing something that is buggy and people can easily exploit it easily, then I think you're not just doing anything at all. Acha, let me ask you this, JJ. What do you think about it? So, devs are right according to you, devs are right when it comes to rollback of the thing that they did. Okay, but is it correct? Is it right in your opinion to ban or suspend people because they did not use any third-party tools as well to exploit? Correct. What do you think about that? And before. Yeah, that's what I'm saying. Just let me finish. So what I was saying is they did not use any third-party tools. It was a bug in the game. So do you think because of the bug
people were exploiting the bug but they got banned. अगर हम बात करें कि कोई थर्ड पार्टी टूल वगैरह यूज किया है तो बैन करें, then I think it's fine. It makes sense, yes. It makes But sense. अभी इस केस में क्या है पता है क्या, कि वो रिवर्ट बैक किया and you're complaining about something that you've exploited and you know I agree you've invested your time in it, but तुमने उस टाइम को कैसे इन्वेस्ट किया है, right? You have used something like a cheat. It's kind of a cheat. Okay. ठीक है, and you've used that. तो डेवलपर्स ने रोल बैक कर दिया. इट्स सिंपल. Yeah, आई that एग्री कि तुमने तुम्हारा टाइम और मेहनत डाला है तो रोल बैक किया है, और रोल बैक करने के बाद तुम अगर किसी को कंप्लेन कर रहे हो कि भाई ये तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरा एक्सपी मुझे वापस दे दो, सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग. एंड अगर बैन उस वजह से उन्होंने दिया है ना, तो आई थिंक दैट इट इज 100% यू नो इन द अथॉरिटी ऑफ दोज डेवलपर्स. बिकॉज तुमको अगर 4 बार कोई गाली देगा किसी चीज के लिए तो तुम सुन के थोड़ी लोगे. ठीक है. You'll be like, I bhai, understand. you can go home. This is not your place to talk. Yeah, I mean, makes sense. And as I said, game Ubisoft ka hai, they can make any decision as they want, but we as players are here to discuss about it, whether it is right or not. Right or wrong. Right, exactly. So what you have mentioned is also correct, that they did a rollback, but still players were were not happy about it. Then Ubisoft went ahead and did something extra. Yeah. Now coming to the next one is where next that I wanted to ask you, bro, कि अगर जैसे ये bug future में आता है, मान लो for an example some sort of a similar bug, तो what can they do about it? Because एक बार होता ना कि आप एक मिस्टेक से सीख लेते हो, so that it doesn't happen again. So they already have beta servers and Destiny Division does that, right? Division has their beta servers, वो लोग खेलने को देते हैं सबको, and it's open to everyone. It's not like a limited users को ही उनका access है. तो बेटा का जितना भी कोड है, जितना भी हर एक चीज है, you are already testing it, right? तो रिव्यूज लो ना बंदों से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. कीप अ क्लोज आई ऑन दैट सर्वर. और अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लॉइट है तो इंस्टेंटली उस चीज को फिक्स करो बिफोर इट गोज टू द एक्चुअल रिलीज. राइट. लाइक तुम अल्फा में डाल भी रहे हो उसको और फिर भाई पब्लिक यूज भी कर रही है एंड then you are banning them. So learn ना कि तुम्हारे पास हर एक चीज का प्लेटफॉर्म है. You can have your test cases updated. You can have so many things done. Even I'm a developer. So I know how much, you know, testing is important. Acha, I have another question, bro. So let's suppose bug was there. Devs knew that people are doing something, like they're exploiting the bug. What they could have done is कि servers को offline डाल देते and fix the bug. They could have taken that route instead of कि let people exploit the bug and then later on जाकर के लोगों को ban मार दो सीधा. मतलब devs could have done this as well. What do you think? But उससे उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होता था user base कम होने का instantly. Like let's say if the server is down just because of an exploit and they don't know when it's going to be fixed, and if it's not going up really soon, then they'll just lose their potential players. ऑलरेडी लोग बहुत कम है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंटेंट, और अगर और बंद रखेंगे उसको तो फिर खत्म ही है. ओके, या आई मीन एग्जैक्टली. सो मैं भी वही सोच रहा था कि यार दे कुड हैव डन दिस एज वेल ना. सम अभी इवन डेस्टिनी में भी अगर हम बात करें तो कई कुछ ऐसे मतलब आता है हमारे यहाँ. अभी जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जॉटिक जो प्लेयर्स वो कर रहे थे, डुप्लीकेट कर रहे थे, उसका एक बग आया था. ठीक है, तो इट वाज देयर फॉर फ्यू डेज. बंजी ने नोटिस किया और फिर उसको फिक्स कर दिया. करेक्ट, राइट. तो अभी बंजी क्या करता है, अगर वो किसी चीज का एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, तो वो एक सेक्शन बंद करता है इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द होल सर्वर. राइट, तो अभी लेट्स से एक इवेंट है जिसमें वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वो इवेंट क्लोज कर दो इंस्टेड ऑफ शटिंग डाउन द होल सर्विस. राइट, दे कुड हैव डन दिस एग्जैक्टली. पार्ट ऑफ द मैप इज क्लोज्ड एंड पीपल आर अनेबल टू एंटर. Yes, they could have done that. They could have सिलेक्टिव एरिया कर सकते थे वो ब्लॉक. एग्जैक्टली, सिलेक्टिव एरिया कर सकते थे. हाँ, they could have done वहां that. पे एक्सपी मिलना बंद करा सकते थे.
एक छोटा सा hot fix लगा के they could have completely shut down the section where you get XP. Right. And ये हमने आज डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग. सो व्हाट वुड बी योर फाइनल टेक ऑन दिस ब्रो? जो होल जो पूरा सिनेरियो हुआ है, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि बग आया, प्लेयर्स ने एक्सप्लॉइट किया, devs could have gone a different way in terms of handling this whole scenario. In fact, we have a user in, like, we have someone in the chat as well, and this guy, he said he did not even looked at the glitch. He was just farming, what do you call it, summit, but then even he got banned. So मुझे कैसे लगा वो खाली पूछना था कि what was the reason. अभी कैसा होता है कि वो लोग ने ना, even these devs they don't actually see who was where जब ये ऐसा revert back करना होता है और ban करना होता है. तो maybe because of a revert he might have, you know, mailed them, reached out to them. Yeah, exactly. So what I'm trying to say is कि हो सकता है कि शायद इस ban wave के अंदर कुछ ऐसे भी लोग फंस गए हैं जिन्होंने बेचारों ने किया ही नहीं, कुछ नहीं किया. ऐसा भी हो सकता है ना. Okay, another, we have Vipress, what she's saying, they should have took descent mode offline or made it solo to fix the issue instead of banning people later. They could, yes, they could have done this as well. Trying to say, yeah, कि वो at least वो section बंद कर दो so that कोई वापस घुस ना पाए. Why worry about, you know, everything else? Yeah. So like what would you say, what would be your talk if we wrap it up, like your final say in this whole scenario, what just happened? I mean, what they did was right, but अगर हाँ, they should give players a chance. They should check their logs कि किसके वजह से वो चीज हुआ. We developers, we always keep logs of everything. We know किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया. तो give players a chance कि भाई हाँ ठीक है, if you were not in that event and you didn't gain any XP through that event, then they should get what they you know, had. But at the same time, I understand it's also difficult. The reason is कि it's not just one small thing. Like, it depends on the player base as well. Database में कितना data है, कितना करना पड़ेगा revert उनको, कितनों का करना पड़ेगा. I'm sorry to interrupt you here, JJ, but do you think यहाँ पे थोड़ा सा laziness भी दिखाई है devs की तरफ से? Because जो भी what you just said, it takes, like, it requires a lot of time to go through all these things and then verify and then take necessary steps. क्योंकि वो आलस आ ही जाता है. Imagine you being you know, checking a register. ठीक है. Exactly. तुम अगर समझो तुम किसी society, if you are in a society and that society is maintaining a visitor register, and you have to go through, you know, a register of 7 billion people. Exactly. How are you going to manage that? So instead of that, as we discussed earlier as well, when devs knew that there is a bug, as Vipress mentioned, they could have taken down the descent mode, or they could have made it like accessible to solo players so that people could not do the glitch, or they could have just taken off the servers offline until they fix it. कितना होता max to max 24 hours लगते हैं. 24 hours में तो आई गेस ठीक कर ही लेते वो, हालांकि उससे पहले ही फिक्स कर देते, पर उन्होंने नहीं किया. अनफॉर्चुनेटली नहीं किया. एग्जैक्टली. एंड एट द सेम टाइम ये भी है कि यार प्लेयर्स को मालूम था कि एक्सपी ग्लिच है, एंड और यू मतलब डेव्स ने पास्ट में भी ऐसा किया हुआ है. तो कहीं ना कहीं व्हाट आई थिंक इज कि यू नो सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक इज फ्रॉम बोथ द एंड्स. व्हाट डू यू थिंक? करेक्ट, क्योंकि पहले भी जैसा आपने बोला कि दे हैव अलाउड यूजर्स टू एक्सप्लॉइट. तो वो एक्सप्लॉइट अगर तुम उनको अलाउ कर रहे हो, देन डोंट रिवर्ट इट बैक. क्योंकि पास्ट में हुआ था, उन्होंने अलाउ भी किया था. दे इवन मेंशन्ड कि ये इजीली फिक्सेबल नहीं है. एक्सप्लॉइट हाउ मच एवर यू वांट. एंड आई गेस उस टाइम का रिवर्ट नहीं हुआ है. राइट. So if that was, you know, they could have done the same thing here as well. Okay. So but back to back हुआ, इसके लिए उन्होंने, you know, they decided to go with the route of reverting. Yeah, and then the ban. See, as I said, reverting is okay with me, but banning people. Banning should not have been done. Yeah, I mean, not unless someone is using a third-party software. I think वहाँ पे थोड़ा सा वो you know leniency दिखा सकते थे, because no one used any third-party software or a tool to cheat. It was a bug in the game that's what you know people have exploited, and
हाँ उनको थोड़ा सा पनिश कर सकते थे इन अ वे, बट लाइक परमा बैन मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गया. It's too much. And as I said earlier as well, we had a user in the chat. He said कि वो भाई ban हो उसको ban लगा, and even though he was not doing, he wasn't exploiting it Hacking actually. or anything, yeah. Yeah. So, anyways, guys, so आज का podcast यहीं खत्म करते हैं. Thank you so much for listening to our podcast. अभी हम next time मिलते हैं. Until then, take care. Thank you, JJ, for talking to us, and everyone in the chat as well who has asked questions. Love you guys. See you next time.